Welcome to Arkida Show. Hello. Hello. Manish? Hello, am I Yeah. audible? Yeah. Yeah. Yeah, hi. Okay. So should we start the meeting interview? Yeah, you can start the meeting. Okay. Sure. Manish, this interview we will feature on our YouTube channel. Okay. So Okay. so I guess you don't have a problem with it. No, Okay. not an Sure. issue. सो हम हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोलेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा मिक्सअप रहे, ठीक है? सो Sure. सो हम स्टार्ट करते हैं हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि आप किस तरीके से आप आर्किटेक्चरल में परस्यूइंग कर सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं उस सेक्टर में, है ना? क्योंकि अभी आज के टाइम पे इंडिया में उस तरह का भी सेक्टर अभी डेवलप नहीं हुआ। हम्म। उसके बारे में हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे। तो मेरा एक आपसे क्वेश्चन रहेगा स्टार्टिंग का कि आपने इस सेक्टर को क्यों चुना और इसमें आपका मतलब क्या मेन गोल है कि मतलब कहाँ तक आपको पहुंचना है, और यही सेक्टर क्यों, आर्किटेक्चर सेक्टर क्यों? मतलब बेसिकली आई डिडंट वांट टू परस्यू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर तो परस्यू नहीं करना था, परस्यू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना था। But like when I went into it, I got a really good rank in both engineering and architecture. So I just decided that this would be more creative for me as I was good in sketching and creating paintings as well. And then when I see the entire curricular of both the both the different spectrums, I just found it to be more interesting. So then I decided कि हाँ ठीक है, architectural background में एक बार जाके देखते हैं. Then I always had a choice to actually swap because I had the rank in both the categories. So I went into it and I really liked the atmosphere, the culture, the kind of activities we had. So the entire first year of my education actually made me love architecture. And from that moment, I never looked back. Like I just wanted to become an architect from that moment. Like once I decided that okay, I'm going into this field, and that was the time. So difficulties, they might come while you are choosing the particular field. I think it is the time when you are in 11th and then you are deciding your subject, and उसके बाद में आप 12th में just after you give multiple examination. I don't know कि अभी कितने exam होते हैं, but at our time there used to be AIEEE for both the categories. So उसको देने के बाद भी बहुत कंफ्यूजन रहता है दैट सम पीपल दे टेक थिंग्स ऑन ऑफ देयर चॉइसेस. कुछ लोग जो रहते हैं वो चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्हें क्या मिलने वाला है. सो हम्म, आई वाज रियली ब्लेस्ड दैट आई एक्चुअली took something that I decided, and then I pursued it, and I'm still pursuing it till now. सो जो डिफिकल्टीज की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज विच इज आफ्टर 12th, वो डिसाइड करने के बाद ही होती है. वन समवन इनटू द आर्किटेक्चरल फील्ड, I'm sure that they're gonna start liking it. And then the current trend, I think from 2015 to 20, if I see, there was a boom in architectural education. But अभी थोड़ा सा scenario, I think down है, या फिर people are pursuing more into diplomas and they are just continuing with their diploma and starting their practices. That is something which is happening more nowadays. But still, yeah, that was the journey. And then difficulties, I feel that deciding factor is the difficulty. There is no difficulty. Once you have started something, you just go on. ओके. सो अच्छा लगा, बट लाइक जैसे आपने कहा तो आपके पास चॉइस थी कि अगर सपोज इसमें हम्म. नहीं होता है तो हमारे पास एक सेकेंडरी ऑप्शन है जहाँ पे हम जा सकते हैं, है ना? हम्म. बट लाइक हम्म. बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, है ना? जैसे कि वेन एवर यू चूज वन थिंग एट द टाइम, सो आपको उसमें लगता है कि आप उसी में जाएंगे क्योंकि फिर क्योंकि फिर हमारा टाइम भी जाता है, क्योंकि आप इसमें 2 या 3 साल आप जैसे ही आप देते हैं तो फिर उसके बाद फिर अब वापस उसमें जाना थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है। और सेकेंडरी थिंग जैसे आपने कहा, तो इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड में इसमें कुछ आर्किटेक्चर में है, या आप कुछ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे? मैं जैसे मेरे पूरे खानदान से पहला इंसान हूँ जिसने साइंस मैथमेटिक्स ली थी. सो देर अच्छा। इज नो सच फैमिली बैकग्राउंड. देर इज नो वन इन द इवन इन द हिस्ट्री ऑफ माय खानदान that somebody has taken something like this.
and then there was no person in the planning also. So one thing that I knew for sure, that there would be a lot of difficulties while I'll be pursuing this career, because I feel that if you have a established family background is in this particular field, there would be a bit of ease in the market, right? Yes, And yes, if you don't have anyone, yeah, if you don't have anyone, difficulties रहेंगी. But yeah, जो shooting capacity है वो ज़्यादा high होगी. I feel like if you don't have any family background, you will be shooting in a more capacity than anyone who is having a background of such architectural or something like that. So that's what my concern is. But family background की अगर मतलब देखें, so even for them it was somehow unexpected, but my brother supported me a lot because he knew that this would be the best field that I can pursue. And I kept on telling my family as well that no, I don't want to be in architecture before coming inside. And once I started, then I just simply told them, then this is something that I really wanted to pursue. ओके ओके। लाइक जैसे आपने बताया, तो मतलब आपकी मतलब स्कूलिंग से लेके फिर आपने कैसे चूज किया, एंड लाइक फिर आपको जो आपने प्रोजेक्ट डन अभी किए अभी थे, लाइक बिकॉज क्योंकि कोविड में आया था आपका बीच में, 2019 से लेके 2021 तक बीच में कोविड भी था, तो उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्योंकि जैसे आपने कहा, तो इवन 2019 से लेके 21 तक बहुत सारी जो लाइक बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टीज आ रही थी, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन था वो डाउन हो गया था बीच में, लाइक जो घर वर का था, तो उसमें आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई है ना, तो ये सारी चीजें आप कैसे आपने कैसे मैनेज किए फिर उसमें 2000 कोविड के टाइम पे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई कोविड के टाइम पे. एंड आई फील लाइक सेंटेंस को रॉन्गली मत लेना. आई थिंक द कोविड टाइम वाज, I feel personally that was the best time for my business because it just boomed. Before COVID, there was some bit of struggle because I've taken a lot of education. Like there is a long education background that I keep, and after that, I established my practice. So there were many unsatisfying moments where I actually felt that okay, what I'm doing and why I'm doing this. I'm not even getting something, not on the basis of payments, on the basis of project, that I'm not even getting something that I really deserve on the basis of my education. But in the COVID time, I feel the the concept of someone is not giving more attention to their project, and then people are looking for someone else actually helped me out. So many big architects who were maybe busy or not doing their projects or not taking care of their projects in the COVID. Actually, the nearby areas, I just ran a campaign, and then I got many leads that this person was our architect, and he is not coming, he is not seeing, he is not even sending the plan. He's saying that he doesn't have any staff and all. And in that time, I worked on my full capacity. Like I hired people, like I don't know when the concept of work from home came, but I had a lot of people that time, like who were working for me from their home. And I took a lot of project in the different areas, like not just in Jaipur, but in the nearby districts of Jaipur, even outside Jaipur. My reach was still Kharagpur as well, Kharagpur and Hyderabad as well. So that was the time I expanded actually. And I think that's the time only which is working good for me, like for my reputation and my fame, whatsoever I'm gaining currently in my practice. ओके। सो जैसे आपने बताया कि अभी आप जयपुर और खड़गपुर तक आपने किया, और आप हैदराबाद में भी आपने किया, आपका जो बिजनेस है काफी एक्सपेंड कर लिया आपने, तो आप मतलब जो आपको क्लाइंट्स के साथ आप डील करते हैं, वो क्लाइंट सिलेक्शन कैसे होता है, और मेनली आप उसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, जैसे बिकॉज लाइक जो आपका प्रोडक्ट मटेरियल है, बिकॉज आपका इसमें केवल ओनली आर्किटेक्चर, और आप डिजाइनिंग भी करते हैं, मतलब फर्नीचर हो गया, लाइटिंग हो गया, उसको भी आप चूज करना, तो वो सारी चीजें भी को भी आप हैंडल करते हैं, मतलब आपका मटेरियल का ही रहता है, किस तरीके से आपका वो प्रोसेस होता है? नहीं, वो पूरी एक लाइक आई थिंक वो एक कॉमन प्रोसेस है इन ऑल द डिजाइन फर्म्स, दैट दे विल फर्स्ट डिजाइन, एंड देन देयर आर डिफरेंट यू कैन से दैट डिफरेंट business concepts that multiple firms are following. First could be that I'll be just designing. Second could be I'll be designing and executing as well. Third could be I'll be just designing and then suggesting you vendors, materials, and all these kind of things. And there are few other people who are called the boutique designer. They'll be designing, crafting, making the things as well, and doing some hands-on also on the side. So different approaches रहती हैं.
So I'm always open, because I cannot just simply, like, in this era of competition, I can't just simply say to any of the client that okay, मैं केवल design ही करूंगा. If they want me to find a person for the execution, or they want me to execute as well, I'll just find my resources, collect my resources, and somehow make them do the workings. But yeah, while designing also, I make sure that जो भी मैं design कर रहा हूँ, it should be practical and it should be available in the market either, or it should be easily, like, and it could be easily made by the vendors that I'm choosing. So product से लेकर उसके अंदर की themes को लेकर, like I remember in one of the project we even designed the menu as well as the dresses of people, like of the waiters and the managers as well. So on that level also we have went, and those were the projects that usually people don't get as well. And then even if they are getting bigger projects, it is really difficult for an architect to poke their noses into each and every details as well. But maybe I was blessed enough to go in such kind of things as well, that we designed each and everything. So there is no such particular approach that I can actually explain कि कैसे करना चाहिए, जैसे मिले वैसा करना चाहिए, I feel. But हाँ, you should not compromise with your values, that's all. Yeah, like principle you can say. Okay. और जैसे आपने कहा, तो अभी आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं उसमें काफी सारा ट्रेंड आता है, आर्किटेक्चर में काफी सारी चीजें अपडेट होती है, ट्रेंड आता है, मटेरियल को अपडेट करना होता है, तो आप उसको कैसे लेके चलते हैं? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हमारे हॉस्पिटैलिटी पे चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल चल रहा है हमारा, एंड रेजिडेंशियल इंटीरियर्स हैं, इंडिपेंडेंट रेजिडेंस भी है हमारे पास में. सो दीज आर द प्रोजेक्ट दैट वी आर करंटली वर्किंग. वी हैव वन हॉस्पिटल आल्सो. सो इसमें, लाइक, आई कुडंट कनेक्ट, मे बी आई जस्ट गॉट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन आई कुडंट कनेक्ट. सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप देखते हैं कि मार्केट में काफी सारा ट्रेंड आता है, न्यू न्यू. जैसे पहले जो आर्किटेक्चर था थोड़ा सा अलग था, उसमें नया नया ट्रेंड आया, नया नया मटेरियल को चूज करते हैं, नई नई डिजाइनिंग आती है, बीआईएम फाइल्स आती हैं. तो उसको मैं कह रहा हूँ, उस ट्रेंड को कैसे मैच करते हैं, अपने अपने काम में लेके आते हैं? हाँ, वो तो हम करते हैं. बेसिकली अभी करंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, हम्म. and many other factors are running on this industry. So I established a different company, Plan Metrics, as well, so which is working on artificial intelligence based modules of architecture, because I feel कि the coming 5 years the entire the core industry of architectural planning and designing would be demolished. So architects have to find some other ways of finding clients as well as designing as well, because nowadays you can just simply write one line and then it would generate your 3ds and renders as well. You don't even need to download a 3D software. So in that type of era, I've maybe decided that we'll be establishing a new company which will be taking care of what currently going in the market, which is more than BIM, which is more than any of the architectural visualization software, which is more than anything. Means we even bet on our designs that in one shot the design would be finalized. You don't need to give 5 or 6 options. In that particular scenario also, we play with the with the prompt of client, with the prompts of our vendors as well as the contractors, and even we have included some of the manufacturers as well. So we don't need to go anywhere. We just simply can in one day or maximum in 2 days we can decide what client wants and we can freeze out things. So we are working on that currently. Like, it's been almost 9 months that we have started that thing. So yeah, we are coping up with the trends in architecture currently. ओके. ओके. जैसे आपने बताया, तो इसमें ये रहता है, और आपका मतलब आप टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि आपका एग्जीक्यूटिंग भी होता है, फिर आपका साइड पे भी आपको सारी चीजें आके मैनेज करनी होती है, तो अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे लेके चलते हैं? फिर आपके क्लाइंट्स के साथ भी मीटिंग होती है, फिर जो नेक्स्ट क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ भी आपका अप टू डेट होना होता है, तो आप क्लाइंट्स अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे हैंडल करते हैं इसमें, आर्किटेक्चर में? Collaboration is first thing. Like, if we are having any project in some different city, we collaborate with other people, and usually we find people as well that only the designing part we'll be doing, rest of the part would be taken care by either a very good contractor who understands our design methodologies, as well as some contractor who has a deep experience of executing things in a perfect manner. Like, there are multiple projects which are on the hold stages as well, because we are not able to find people who can execute them well in in Rajasthan as well as out of Rajasthan also. So
like we generate that kind of trust that in the client, that he can even wait for 2-3 months more, but he'll be just wanting us to do that particular thing. So that is the thing. And then secondly, we choose projects on the basis of what output it can come, it can give to us and to our reputation as well. It's not just like that we'll be taking each and every project. Sometimes we need to take the projects on the basis of some known person is coming, or some person who is coming with the reference and all. So we do that kind of projects also. But most of the time, even if you see our portfolio, you'll be seeing that most of the projects are hand picked and crafted. ओके, सो उसमें आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह के आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं? एज सच कैटेगरी वाइज कुछ भी नहीं है, बट हाँ ये जरूर है दैट प्रोजेक्ट का स्केल क्या है और क्लाइंट कितना ओपन है टुवर्ड्स न्यू आइडियाज on the basis. Because if the client is not open, he, like, imagine if a client has a very straightforward brief that उसको यही चाहिए और उसके पास में ऑलरेडी आइडियाज हैं, so for sure उस client के साथ में आपको बहुत problems आती हैं, because he'll be arrogant sometimes, or maybe he won't be agreeing to most of the things that you feel would be helpful for him. And most of the time also, अगर आप क्लाइंट से पहली बार मिलते हो तभी पता लग जाता है that he'll be paying you or not, or maybe what kind of person he is. And it is really important for us as well, that to understand the personality of a client. So we choose project on the basis of the first conversation with the client as well, ताकि आगे वो दिक्कत नहीं आए. Because I faced a lot of such kind of problems in my early days of practice. ओके, और जैसे आपने ये बताया, तो आपने ये स्टार्ट कब से किया था आर्किटेक्चर, व्हेन यू स्टार्टेड? 2010-15 मेरा बैचलर्स का बैच था. 15-16 I went to Germany for my masters, and 16 to 18 I was in IIT Bombay for my research. So like in total it took 8 years for me to get education, but I got professional license in 2015 only to work as a practice. So the establishment of the company was done in 2015. ओके, Yeah, so from that moment, like, it's been almost 8 years now. 8 years, yeah. We'll be completing 8 years in October. ओके, सो कांग्रेट्स. एंड जैसे आपने बताया, तो अभी तक आपने हम्म, राजस्थान के बाहर या जयपुर के बाहर आपने कैसे कैसे प्रोजेक्ट को आपने हैंडल किया है, और कहाँ कहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किए हैं? मोस्टली आपके जो हमने प्रोजेक्ट होते हैं. हमने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मेनली जो जयपुर के बाहर प्रोजेक्ट्स रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट not if I'm not considering Hyderabad, most of the projects are hospitality, industrial and hospital. And residentials are specifically in Jaipur and Hyderabad. And we have done a huge industrial project for IOCL in Kharagpur as well. So ऐसा कोई category नहीं है, because like, people actually advise me that most of the famous designers have specified categories, that they'll be just doing commercial project or they'll be just doing industrial project. But I feel up till 2000 or up till 2005, mostly this used to happen. Now 2000, from 2005 to like, if I'm talking about the current situation, there is a lot of competition that you simply can't say, like I was talking about, you simply can't say no, and you simply can't decide what stream you want to work in. And even if you see, most of the designers who used to design in a specific stream on those days are working on each and every projects now, until they are not very much established architects. They are working on commercial, residential, each and everything. You won't find any specific category to architects. Because like whenever like you start your career, like उस टाइम आपके पास चॉइस नहीं होती, चॉइस बहुत लिमिटेड होती है, बिकॉज आपको उसमें हाँ, basically. Yeah, As I was talking about that, you like, your family background is not from the same industry, so you have choices, like you make your choices either, or secondly, like, you have to take each and everything once, till the moment you get fame, and then that position where you can actually say no to any project, and then you can just become a brand where people actually want you to design their projects. Till that moment you can't say no. ओके. और जैसे आपने ये बताया, ये चीजें बताई, फिर अभी आपको किस तरह की डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं व्हेनेवर यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट्स में कुछ कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है. द डिफिकल्टीज आर रिलेटेड टू ओनली फ्यू थिंग्स. मे बी यू कैन से दैट मैं, like, personally, if I'm talking about, I usually be very confused while talking to
not talking to the client actually. I become confused in between the design sometimes, that uh, that I maybe take a lot of opinions as well, not from the other people, but sometimes even I can ask the client also that what you are liking amongst all these kind of things. That I don't consider as the difficulty. Maybe that I consider as I develop more friendly relationship with the client by doing that. Difficulties as such, nothing. Like I can't how to say that there is no difficulties. Only the difficulties like uh, it might happen sometimes when let's say few months of the year when you don't have any project, then you have negative thoughts. Okay, what will happen? How I'll be taking care of the expenses of the staff salaries and office and all these kind of things. But while thinking about all these things, suddenly you get project and then everything becomes normal. So this is no as such difficulty, but there used to be a lot, a lot. I have been into many of the troubles, like no other maybe architect would even think about that. Like when I was uh, below 25 also, I've made a lot of troubles, been into a lot of troubles as well because of this industry, even thought of giving up on that architecture as well. But then everything went well and then I'm doing well. ओके ओके सो आप यहाँ पे आप लाइक आप जो आपका डिजाइनिंग होता है तो आप इसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी करते हैं? आप डिजाइनिंग किस तरह की होती है आपकी? प्रोडक्ट डिजाइन हम करते हैं, बट प्रोडक्ट डिजाइन हम एज सच हमने आज तक किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं किया है. वी हैव अ सेपरेट यूनिट. You can check as well, like we have few products that I made out of my curiosity and my enthusiasm towards product making, because that is something like if I was not if मैं आर्किटेक्ट नहीं होता और तो मैं मतलब पायलट भी नहीं होता तो मैं क्या होता, तो आई वुड हैव बिकम अ फैशन डिजाइनर और द प्रोडक्ट डिजाइनर. दैट्स व्हाट आई हैव एक्चुअली डिसाइडेड. सो मैंने कपड़े भी डिजाइन करे हैं काफी, मैंने चप्पलें भी डिजाइन करी हैं ऐसे, और प्रोडक्ट्स भी बहुत करे हैं, बट एज सच किसी किसी प्रोजेक्ट में एज सच कुछ नहीं किया कि हाँ मैंने कुछ डिजाइन करके बनाया. बट इफ यू आर कंसिडरिंग प्रोडक्ट एज लाइक some prototype for like a particular project where we have done interiors and we have designed the specific door that you will not find anywhere, or maybe a specific prototype that you won't find anywhere, then we have done plenty of. ओके सो किस तरह के मतलब आपका जो डिजाइनिंग प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है? आपने अभी तक किस तरह के प्रोडक्ट को डिजाइन किया है? मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा, इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा. फर्नीचर हो गए, ठीक फर्नीचर है. के अलावा कुछ स्पेसिफिक जैसे हैंडल्स हो गए, फर्नीचर हो गए, एंड वी हैव डिजाइन लाइट्स एज वेल. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक व्हाट यू कॉल दैट थिंग, DIY लाइट्स वगैरह जो होती हैं फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एज वेल. सो उस तरीके से डिजाइन करी है. उसमें क्या है कि वी ट्राई टू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट, लाइक इनिशियल कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टार्टेड. Like I suppose if I'm designing a residence and that residence have everything in a same theme, but we are not able to find lights in the market which might be which might um, beautify the entire theme of the project, then we have to design that particular thing. ओके So like then there are n number of products that we have designed. But if I consider product which is in my domain which I am selling commercially, then there are few furnitures and few planters that we have done. ओके और जैसे आपने बताया तो फिर उसमें जैसे प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद उसमें क्या क्या मतलब आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप आपने प्रोजेक्ट सपोज आपने ड्राइंग कर दी है ना, आप फिर इनिशियल पार्ट में आपने जाके उसके रॉ मटेरियल को आपने कलेक्ट करा, जैसे आपने बताया आपने वो सारी चीजों को हैंडल किया. फिर जाके आपने जो साइट है वहां पे आपने जाके विजिट किया, तो आप उस वहां पे आप जाके किस तरीके से प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं? बिकॉज सपोज आपने लाइटिंग का व्यू देखा है, उसमें लाइटिंग लाइटिंग के लिए फिर आपको रात को भी देखना होगा, क्योंकि उसमें या बहुत सारी चीजें जो आपको रात को भी देखनी होती है कि उसमें किस तरह का व्यू आ Yeah. रहा है. मतलब इनिशियल डेज में हाँ ऐसा देखना होता है, बट थोड़ा थोड़ा जस्ट लाइक व्हेन यू आर इनटू द थिंग, लाइक प्रोफेशन में होते हो तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी एक्सपीरियंस. लाइट कितना ल्यूमेन देगी. हाँ मतलब ये होता है, और इसके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती है, 2 या 3 साल में पता लग जाता है. बट या लाइक फ्रीक्वेंट साइट विजिट्स आर नेसेसरी बिकॉज यू लर्न अ लॉट. एंड कई बार ऐसा भी होता है दैट इफ यू आर गोइंग टू द साइट, यू माइट डू सम वंडर, लाइक सम एलिमेंट जो उसका यूएसपी बन जाए, तुम वहां पे बनवा सकते हो. बिकॉज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग, कारपेंटर काम कर रहा रहेगा, कोई और दूसरा काम कर रहा रहेगा. यू कैन सिंपली आस्क देम टू डिजाइन समथिंग जो कि उसका यूएसपी बन सकता है. सो इसलिए फ्रीक्वेंट साइट विजिट नेसेसरी. बट बाकी हमारा जो क्या रहता है, लाइक वंस वी आर डन विद द डिजाइंस एंड ऑल, व्हेन वंस द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, वी गो फॉर द मार्किंग्स.
and the final marking would be like which would be done on the site. And there are few things which we can even start before even making the drawings, like usual things that we do, like demolition and maybe the false channels and all these kind of things could be done before as well. After the marking and all, we have a meeting once on a site with all the contractors where we explain each and everything to them, and then we take regular reviews from them. We create a WhatsApp group of all the contractors including the client, and one group with the client only where they can share something and we can advise the contractors also. So this thing goes on continuously, and whenever it is required we usually go to the sites. ओके। और जैसे आपने ये चीजें बताई, और फिर अब भी आप आर्किटेक्चर को मतलब आपका क्या फोकस है, आपको कहाँ तक पहुंचना है, क्या मतलब एक दिमाग में रहता है कि मुझे हाँ आर्किटेक्चर में इस एक एम है, तो या एक करियर है, अपने करियर को कहाँ तक आपको आपको कैसा लगता है कि आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं आर्किटेक्चर में? अब वैसे तो स्काई इज द लिमिट, बट एम बांधूंगा तो देर इज अ बैरियर, राइट? सो देर इज नो सच एम, लाइक दिस इज इनफाइनाइट. Wherever it takes me, and the faster it takes me is beneficial, because if I decide some aim and some other person who's more visionary than me, and then he decides better the aim than me, then mine is lower than that. So ओके। it's better to go infinite and blind, like it's like be the bull नो, in the नो लिमिट्स। empty land. या Yeah, नो there is no लिमिट। limit, like be the bull in the empty land, so you can go anywhere, like but yeah, other people would be वो साइड रहेंगे, लाइक वंस यू आर गोइंग एज अ बुल दे विल बी साइडेड. सो एक वो स्टेज आती है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर एम्स एंड ऑल आर बीइंग डिसाइडेड. वो स्टेज तब आती है व्हेन यू आर so much established that you don't even need to think about anything. So those kind of things are there, right? So ऐसे मैंने कोई aim नहीं बनाया. Previously when I was in college, Pritzker used to be the aim, but now I feel that it's not that necessary that हाँ वो लेना है, उससे भी आगे कुछ हो सकता है, वैसा कुछ बड़ा हो सकता है. सो आई फील दैट एम रखने से अच्छा है जस्ट कीप ऑन वर्किंग. ओके। सो जैसे हमारी मीटिंग का टाइम ओवर ओवर होने को आ गया है, सो आपसे फर्स्ट थिंग इज दैट लाइक आपसे बात करके काफी अच्छी चीजें, काफी सारी नॉलेज मिला, किस तरीके से क्या डिफिकल्टीज होती हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब अगर सपोज आपको उसमें एक इजी इजी होना चाहिए नहीं, फैमिली बैकग्राउंड इज लाइक इनहेरेंट, दैट वुड बी ऑलवेज द सेम. फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी हो, इफ यू वांट टू बट परस्यू लाइक समथिंग देन यू शुड डू इट. चूज करते टाइम आपको वो हेल्प करता है, मेरे कहने का मतलब है। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प करता हाँ, है. तो इसलिए For sure. और जैसे आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन बताया, आपने इंटीरियर, आपने अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के बारे में बताया, तो वो सारी चीजें आपको जान के अच्छा लगा। फिर आपने जैसे आपने एआई के बारे में बताया, जो हम्म. वो सारी चीजें जान के मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब इस तरीके से वे मार्केट ये ग्रो कर रही है ना। बाकी जैसे हमारे टाइम खत्म होने को आ गया है, तो फिर मिलते हैं फिर आपसे कभी। Yeah, sure, definitely. It was really nice talking to you as well, Ankit. Bye bye, थैंक यू। have a nice day. बाय द वे, थैंक यू फॉर योर टाइम। या Yeah, you're welcome.